Hello everyone, this is Dhananjay Shinde and today we are going to discuss about adverse effects of tetracyclines. So I have mentioned one mnemonics, that is Kapil Dev. So K in Kapil Dev we stand for kidney toxicity, A stand for anti-anabolic effect, P stand for phototoxicity, I stand for ink ICP, then L stand for liver toxicity, D stand for diabetes insipidus, E stand for enamel problem, and V stand for vestibular toxicity. So these are the adverse effects involved in tetracycline, and this is the mnemonic to remember these all kinds of adverse effects. Different side effects of morphine. So to remember these side effects, I have mentioned one mnemonics, that is morphine. So M in morphine is stand for meiosis, O stand for out of it, that is sedation, R stand for respiratory depression, P stand for pneumonia, that is aspiration, S stand for hypotension, I stand for infrequency, that is constipation and urinary retention, N stand for nausea, and E stand for emesis. So these are the side effects involved in morphine, and this is the mnemonics to remember these all side effects. Different anti-Parkinson drugs, and to remember these all drugs I have mentioned one mnemonics, that is SALAD. So S in SALAD is stand for selegiline, A stand for anticholinergic drugs included trihexyphenidyl, benzhexol, ofenadine, and L stand for levodopa plus peripheral decarboxylase inhibitor included carbidopa, benzerazide, and amantadine. D stand for dopamine postsynaptic receptor agonist included bromocriptine, lisuride, and pergolide drugs. So these are the drugs involved in anti-Parkinson drugs. So and this is the mnemonics to remember these all drugs. साइड इफेक्ट्स ऑफ मिथिल डोपा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे निमोनिक्स मेंशन किया है, दैट इज मिथिल डोपा. सो यम इन मिथिल डोपा स्टैंड फॉर मेंटल रिटार्डेशन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टी स्टैंड फॉर टॉलरेंस, एच स्टैंड फॉर हेडेक और हेपेटोटॉक्सिसिटी, P stand for psychological upset, L stand for lactation in female, D stand for dry mouth, O stand for edema, P stand for Parkinsonism, and last A stand for anemia, that is hemolytic anemia. So these are the side effects involved in methyl-dopa, and this is the mnemonics to remember these all side effects. एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनिटोइन. तो फिनिटोइन के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसे याद करने के लिए मैंने यहाँ पे निमोनिक्स मेंशन किया है, दैट इज फिनिटोइन. तो जो P है इन फिनिटोइन, इट स्टैंड फॉर द P40 इंटरैक्शन, S स्टैंड फॉर द हिर्सुटिज्म, E स्टैंड फॉर एनलार्ज्ड गम्स, N स्टैंड फॉर निस्टैग्मस, Y स्टैंड फॉर येलो ब्राउनिंग ऑफ स्किन, T स्टैंड फॉर टेराटोजेनिसिटी, O स्टैंड फॉर ओस्टियोमैलासिया, I स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस विद B12 मेटाबॉलिज्म, और इसके वजह से एनीमिया होता है, एंड N स्टैंड फॉर न्यूरोपैथीज, दैट इज वर्टिगो, अटैक्सिया, एंड हेडेक. सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स इन्वॉल्व इन फिनिटोइन.